everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me, Shweta. I hope you all are doing well, and as you would have already seen the title of this video is going to be a makeover video of my guest bedroom. I know I am a little late to upload this video guys, but I hope you would enjoy and appreciate this makeover. So guys, the products which I used in this makeover, उन सभी products के haul videos मैं बना चुकी हूँ, and you can go and check on my channel. There are haul videos and you will get the links of all products in the description box of those haul videos. So without any further ado, let's get into the makeover. So guys, I'm going to show you how exactly the room looks like right now. This is our guest bedroom, and as you see, the room is very simple and basic room. We do not have much things in this room, and as you see, the walls are also empty. And I'm going to do a makeover of this room only. We have one double bed in this room for our guests to sleep, one double almirah to keep stuff, and one wall mounted mirror to dress up. And as you see, the lot of space has already been taken by double bed, so have very limited scope to add any new furniture in this room. Also keeping the size of the room into consideration guys, मैंने इस रूम का जो वॉल कलर है वो वाइट रखा है because light tone of shades always help in making your space look more spacious and airy. और ये जो फ्रंट ये जो पिलर का फ्रंट एंड वॉल है, ये मैंने हल्का सा ग्रेइश टोन में रखा है to have a good color combination. ये जो डबल बेड है और अलमीरा है और ये वॉल माउंटेड मिरर है, ये तीनों चीज़ें मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ गाइस. दीज थ्री थिंग्स आर गोना रिमेन सेम इन दिस रूम. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द मेकओवर. सो मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ यहाँ पे कर्टेन्स चेंज करने से. एंड हेयर आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ माई हस्बैंड थैंक्स टू माई हाइट. और हम यहाँ पे क्विकली कर्टेन चेंज कर लेंगे. गाइज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में मेकओवर में यूज़ करूँगी वो सारे प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी हॉल वीडियो में बना चुकी हूँ. यू कैन गो एंड चेक ऑन माई चैनल. यू गेट द लिंक्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दोज वीडियोज़. So you can see guys how beautiful these curtains are looking in this room, having a good combination with the walls. Changing curtains only in this room is making a lot of difference, and I am really loving these curtains. इनकी height और width दोनों ही बहुत अच्छी है guys. These are very good looking curtains. और गाइज अब मैं लगा रही हूँ इस पिलर की फ्रंट एंड वॉल पे ये वॉल पोस्टर्स. These posters are really very easy to paste it on the wall. I really like the color combination of these posters matching with the color of this pillar, so that is why I decided to put these posters here. It is very easy to paste it on the wall. You only have to peel off the tape और आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करना है वॉल पे जिससे अच्छी तरह से होल्ड हो जाए. The glue is very strong. It holds the wall so well. I really like these posters, particularly on this pillar. और यहाँ इस कॉर्नर में मैं रख रही हूँ प्लांटर्स. प्लांट्स आर दी बेस्ट एडिशन टू लिफ्ट अप एनी कॉर्नर गाइज. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि जो प्लांटर के स्टैंड्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट कैसे हैं, बिकॉज जो मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ख़रीदे थे वो मुझे गोल्डन कलर में रिसीव हुए थे, बट आई हैव पेंटेड दीज स्टैंड्स इन ब्लैक एंड वाइट कलर टू हैव अ कॉम्बिनेशन विद माई मेकओवर. अब मैं यहाँ पे 2 इंडोर प्लांट्स ऐड करूँगी इन प्लांटर्स में. एंड आई रियली लव रियल प्लांट्स, सो मैं हमेशा लाइव प्लांट्स ही रखना पसंद करती हूँ. एंड ऑल्सो आई विल एडवाइज़ यू वन थिंग गाइज, अगर आप ये प्लांटर्स लेते हो तो आई विल एडवाइज़ यू कि आप इसमें डायरेक्ट प्लांटिंग ना करें. आप इसमें पॉट्स रख सकते हो एंड इट विल बी गुड. अदरवाइज़ आपके जो ये प्लांटर्स के पॉट्स हैं ख़राब हो सकते हैं. सो ये जो बेड के ऊपर वाली वॉल है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से बल्ब होल्डर फिक्स करवा लिया है गाइस. और यहाँ पे मैं बल्ब फिक्स कर रही हूँ आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस बल्ब होल्डर. Now close to this bulb holder I am going to hang this stencils pattern wall clock which is looking amazing. ये बहुत लाइट वेट वॉल क्लॉक है गाइज. मैं अब इसी वॉल पे जस्ट अबव द बेड ये वॉल डेकल्स लगाऊंगी, लिव लव लाफ. ये भी गाइज डबल टेप के साथ आते हैं. द ग्लू इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. यू ओनली हैव टू पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड इट होल्ड्स द वॉल सो वेल. You only have to make sure one thing while pasting these wall decals is that कि आप जब इसको लगाओगे ना guys, you have to make sure about the distance.
एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आपको लगाने हैं टू हैव अ सीक्वेंस एंड दीज आर लुकिंग ब्यूटिफुल गाइज, वेरी इजी टू पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड लुक एट द ब्यूटी, दीज आर लुकिंग ब्यूटिफुल on this wall. I really love this stencils pattern of this wall. I do not want to clutter this wall. I'm really loving the makeover so far. Hit the like button if you are also liking this makeover guys. Now I'm going to change the bed sheet and do the bedding. इसको मैं गाइज फास्ट फॉरवर्डिंग पे रख रही हूँ, अदरवाइज द वीडियो विल बी टू लॉन्ग. Adding 2 additional pillows, few cushions. I really love this fur वाला cushion guys, ये मुझे बहुत पसंद है and this is so soft. It's time to add runner और यहाँ पे बेड के सामने में ये रनर डाल रही हूँ in black and white combination और उधर बेड के राइट साइड में जो बेड साइड है वहाँ पे मैं रनर डाल रही हूँ. This runner is a bit lengthier in size to the other one. और यहाँ इस कॉर्नर में जस्ट बिलो द वॉल माउंटेड मिरर मैं रखूँगी एक साइड टेबल. आई वॉन्ट टू मेक दिस मेक ओवर एस्थेटिकली प्लीजिंग. और यहाँ पे मैं रखूँगी इस टेबल पे एक बुद्धा स्टैचू, दीज 2 प्लांट्स. और ये जो प्लांट्स हैं गाइज ये मैंने DIY करे हैं एंड इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ. यू कैन गो एंड चेक ऑन माई चैनल इन शॉर्ट्स. और यहाँ पे मैं रखूँगी कैंडल होल्डर, वाइट कलर कैंडल होल्डर विद कैंडल इन फ्रंट ऑफ बुद्धा. फ्यू बुक्स फॉर आवर गेस्ट इफ दे विश टू रीड. Now I'm going to light up this candle and look at it guys, how beautiful this corner is looking. I did not expect that it will look so good. And now finally our makeover is completed guys, and I'm going to first show you how the room looks like in a day. So I'm going to give you the day look first. Have a look. And if you are wondering guys why I have left this wall empty, this wall is dedicated for TV. We are supposed to hang TV here, not in this video but soon we are going to hang TV here, and that is it. Let's have a quick day look. And now let's have a night look of this room guys. It looks so beautiful, so soothing to eyes. I am really in love with this makeover. Do let me know guys, आपको ये makeover कैसा लगा. अगर आपको ये makeover अच्छा लगा, do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so you get the notification whenever I upload a new video. Like this video. I will see you soon in the next video. Thank you for watching this video guys. Stay tuned. Bye.